हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे वेलकम है। और आज हम क्रिएट करने वाले हैं बकेट। हम देखेंगे कि बकेट कैसे बनाया जाता है सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो चेक करते रिकॉर्डिंग हो रही है। यस, इट इज़ रिकॉर्डिंग। वी विल गो सेलेक्ट दिस न्यू पार्ट, क्लिक इट ओके। यस, यहाँ पर जो हमारा मेजरमेंट हो रहा है इंच, पाउंड और सेकंड में हो रहा है, लेकिन हम में कन्वर्ट कर एम में बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हम MMGS फॉर्मेट को यूज़ करेंगे। चूज़ द फ्रंट प्लेन, क्लिक इट ओके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक 80 जो डायमीटर है उसका एक सर्कल क्रिएट करेंगे। यस, स्मार्ट डायमेंशन इट, क्लिक इट 160। 80 का डायमीटर था, तो 80 का रेडियस था, तो 160 का डायमीटर हो जाएगा। सॉरी, गो टू फीचर, एक्सट्रूड इट। इसको एक्सट्रूड करते हैं अप टू 200 mm। 200 यूनिट तक हमने इसको एक्सट्रूड करा दिया, क्योंकि हम जो बाल्टी बनाने वाले हैं बकेट, वो 200 mm की लेंथ है, उसकी 20 सेंटीमीटर लेंथ है। ओके, नाउ yes, it is done. Or even we can change this from bottom to top, no problem. Done. Select this bottom portion, sketch it, convert this into entity. It is converted into entity. Click the offset button, offset this in about 10 in reverse direction. Okay, it is. Select the convert entity again, just select the offset entity, sorry, reverse the direction, but make it 20 mm, that's okay. Similarly, select this, इसको select कीजिए offset को, reverse the direction, it is all done. Trim this entity, we don't require this. Done. Go to feature, extruded cut, select this extruded cut. Yes, this one and this one. Select these two, contour, close contour. We don't want the depth of cut 1 mm. सपोर्टिंग के लिए 1 mm का हम एक्सट्रूडेड कट लगा रहे हैं, हम बेस क्रिएट कर रहे हैं बकेट का। ओके, सेलेक्ट दिस फेस, फिलेट 1 mm। 1 mm का फिलेट हमने बेस पर दे दिया है। डन। बेस बकेट का जो बन के तैयार हो गया। नाउ सेलेक्ट दिस पोर्शन, स्केच, convert this into entity. This is converted into entities. Offset this, offset हम 10 mm का क्रिएट करेंगे। और इवन वी वांट द थिकनेस ऑफ आवर बकेट इज 5 mm in reverse direction, okay, done. Trim this entity, yes, trim it. Go to feature, simply extruded cut. We want this up to 195 mm of depth. Yes, done. Yes, our base एंड स्ट्रक्चर ऑफ बकेट इज़ क्रिएटेड। लगभग बकेट का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो चुका है। नाउ चूज दिस प्लेन, टॉप प्लेन, क्लिक इट नॉर्मल, मेक इट नॉर्मल, ओके।
make it normal. Now draw a line, center line, from this portion to this portion. We are going to build the supporting of this bucket, जहाँ पर हम लोग हैंडल लगाते हैं, सपोर्ट क्रिएट करने वाले हैं. तो select this line command, draw a, first of all convert this into entities, not this one, clear this selection, convert this into entity, only this line, salute edge converted. Draw a rough profile for this from here, just simply creating a rough profile for this handle. Yes, just create this simple rough profile. Our profile is created now. Smart dimension it. Okay, we want this thickness to be 3 mm, this to be 3, or even we can make this 5 also, no problem. This is 3 and this is 10. Okay, and the distance between these two is 5 mm, and the distance between these two lines is 3 mm, and the radius of this is 1 mm. Okay, almost done. Now the distance from this point to this point is about 26 according to the drawing. This is done. Okay, now what we will do is we will simply revolve this. Sorry, I have forgotten to delete this. Go to sketch command, delete, trim this portion. We want to delete this line. This line is deleted. Click it OK. Go to feature, revolve base boss. Yes, our supporting हैंडल की जो सपोर्टिंग होती है वो क्रिएट हो चुकी है. क्लिक इट ओके. Yes, the profile of the bucket is created. Now we will create the handle supporting. Yes. In order to create the supporting for handles, simply choose this plane. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर एक हॉल क्रिएट करना है. चूज द, गो टू रेफरेंस असेंबली, चूज द प्लेन, चूज टॉप प्लेन. ओके, द डिस्टेंस ऑफ द टॉप प्लेन शुड बी, इट इज़ टू फार, डोंट वरी अबाउट दिस. क्या करने वाले हैं, इसको हम जस्ट 85 क्रिएट करेंगे. 85 और 80, जस्ट 80. यस, ओके, मेक इट नॉर्मल. सेलेक्ट ऑन दिस प्लेन, सेलेक्ट द स्केच. अब एक हम सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में. तो इनका जो मिड पॉइंट होगा इसके लिए हमें होवर करना पड़ेगा. यस, आ गया है हमारा मिड पॉइंट. इसका जो डायमीटर है, हमें 4 mm का डायमीटर क्रिएट करना है. जस्ट क्रिएट इट 4 mm. 4 mm का डायमीटर क्रिएट हो गया. एंड देन गो टू फीचर,
simply extruded cut. We will use the extruded cut command. Extruded cut in the reverse direction. Okay, blind, just keep it 10 or blind. 10 is sufficient, no problem. That is done. Yes, this extruded cut or hole has been created, no problem. Just hide this plane, we don't need this. Now the similar hole we need to create about opposite side, in the opposite side. So simply choose this extruded cut command, mirror it, mirror. Yes, we want to mirror this extruded mirror plane. Yes, this is our mirror plane, top plane. And what we want to mirror this extruded cut command. Yes, you can see that this is projecting here. Just click it OK. As you can see that these two holes are created now. Yes, make it normal. Now we will draw the handle of this bucket. Choose this inner portion, sketch it, go to make it normal, convert this into entities. We have just created the profile. This is the profile about which the sweep command will draw a handle. Okay, make it normal. Now go to feature, exit this sketch. Now go to sketch command, go to sketch and use this 3D sketch command. Okay, from this sketch, draw a line from this part and make it top plane or right plane. Yes, choose this right plane, extend this and this up to here, go back and draw a midpoint of where is this midpoint of this figure. So simply सेलेक्ट, और हम लोग सेंटर लाइन का यूज़ करके भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं. जस्ट ड्रॉ सेंटर लाइन, सेलेक्ट, चूज दिस लाइन कमांड, done, select OK. Our 3D sketch is completed. Now make it normal. These are not appropriate, so we will add some fillet to it. Fillet of 2 mm. 2 mm is not sufficient. We can add 10 mm fillet also. That's good. On both the side. Okay. Exit the sketch. Now we will exit this sketch also. Now we go to the feature command, sweep base command. Our path is selected, but our profile is not selected. For selecting this profile, we will select this profile. Yes, profile is selected.
आवर हैंडल, यस यू कैन सी दिस प्रोजेक्शन, अपना जो हैंडल है वो बन चुका है बकेट का, इसको हम ओके करेंगे, डन। as you can see this handle of this bucket is created, our bucket is created almost. Now we will add some rendering effect to it. Okay, select this sweep command, add this to this body color I have as added, as I have added a red color to the bucket, simply add this. Okay, for this handle we have chosen yellow color, go to paint, plastic, medium, where is it, solid, yes, done. And this is how we have created our bucket, but we want to write some on it. So in order to write this, go to sketch, choose this plane, choose the top plane, okay, make it normal, just extend it, this is sufficient, 100. Okay, now select this plane, sketch on it, draw a line from this point to this point, select this, okay, and now draw the some font, just select this line and draw this, write down bucket, b u bucket, इसका जो साइज़ है बहुत कम है तो इसको हम बड़ा करना चाहते हैं साइज़ को, तो वी विल यूज सिंपली 5 और 10, 10 is sufficient, click it OK, go to exit the sketch, yes, go to feature, split this line, we want to draw this over this surface, curved surface, select this and click it OK. Yes, our bucket is created, hide this plane. Thanks for watching my video and please subscribe it. Yes, we have successfully created this bucket.